मैं कुछ करूँ या ना करूँ, okay, in life, I will definitely have a big nursery where I'll have all sort of plants. Like, this is my dream. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds. So, I just made my bed and just came here to brush, and you can see the ice and water is doing magic to my face. If you want to dip your face in the ice so that you get the all clear skin, I'll go up to the terrace. So come with me till the day of my life. And yeah, I'm excited to show you guys. Let's go. This is basically lemon water that I take early morning. Also, I've put some strands of kesar, which helps, also clears your stomach, guts, good for your skin. So yeah, let's just drink this. The weather is so cool and it's so amazing. I thought, why not do it here? So I'm gonna take you all to my journaling time, also my reading time. I always do it together because it's in my to-do list to read every day, not for knowledge, not for anything, but reading, makes you aware of things. So I'll do that. I'll start my journaling while you can see. Today is the 24th of April 2026. Good day to start. My this diary is about to get over, so it's just like 10 more pages to go. So I've also purchased for me a good journaling diary. I'm going to upgrade it because I saw one journaling copy and a whole set of journaling book where they have stickers, they have the moods, how you're feeling today, and you have every sort of thing. So upgrade it when you feel a little too boring to write. I think you should upgrade, but don't stop journaling because it helps you a lot. So let's get started. Today I'm going to divide the journaling into three parts. First, I'm going to write how my day was yesterday. Then, I'm going to write what's the to do list for today. And then, thirdly, I am going to write some affirmations for myself because that makes me so feel so good about myself. Nobody tells you, oh, you're so beautiful, every day, but don't forget to tell yourself because it's very important to tell yourself how strong you are, how beautiful you are, how powerful you are. So, anything that makes you feel happy, tell about yourself. Don't wait for anyone to tell you. All right? That's it. Good job. Let's start. Finished off with my journaling. Great. Now I have to read only 15 pages from this. And guys, I tell you, this book is one of a kind and it's so amazing. The things that are written here will just make you think that the world is so beautiful, such a powerful place, such a creative place, and everything is aligned. Even if one thing changes, the entire environment changes. So, the creator of this entire universe
was so clear while making it. Today I'm doing all my rituals in my terrace. Like right now I have with me is ice water which I dip my face into because that really helps my skin. It really feels amazing like this. Wow, just dipping yourself in the water feels amazing. Like you're full rejuvenated. How do I see you? Like revived. Yeah. I just got ready and right now I'm going to do some nice puja. After that, I'll go and cook something for myself. So if you wanna come, you can come. Hi guys, welcome back to my channel and आज हम जाएंगे. We are going to go to mango field. Let's see कितना बड़ा आम हो गया है. So yeah, that's that. I'm excited and yeah, I'll be driving. Today is the day where Himani is taking us to the mango field. हाँ हम तो उठ गए थे बहुत सुबह. Like this is typically the village where I stay. तो ये typical हो गया मतलब जहाँ पे people stay in hut kind of area and we have our mango field here. So it's like 10 minutes from our house. So I'll show you. Can you see that? This entire thing is ours and yeah, I think there's a lot of टिकोला. तो चलो हम देखते हैं कितना we can pluck it. We'll not pluck it because बहुत सारे तो गिरे ही होंगे. तो देखते हैं चटनी के लिए कितना निकल सकता है. Yeah. And yeah, wow, this is so pretty. What is this? Like so pretty. And you wanna meet my friends? See my friends out there. Let's go. Let's go. काफी सही लग रहा है भाई. Fresh air, fresh environment. Oh god, I should have worn my shoes. We have to walk literally in itna narrow. You can see? We have to walk like this. मज़ा आता है यार. This is also part of balancing. Like nature has given us so many ways in which we can still balance. And this is none other than the mango field I was talking about. So yeah, this is it. Let me show you guys from here. Like this, it's around 160 trees that we have. It's like a jungle. Yeah, let's go. ओए चाबी नहीं लाया है क्या? So guys, I would like to tell that हम चाबी भूल चुके हैं. But since we have two keys, one is with the ठेकेदार जो हमारा मैंगो फील्ड देखता है, तो वो आ ही रहा होगा अभी. मुझे वेट करना पड़ेगा for the lock to be opened because we can't even climb because there are all this. So we can't go. Ah, what the hell? ओ भाई ये क्या है? So
We'll talk to him and he's bringing the keys. So yeah, let's go. शिवम के पास always होता है एक चारा. So let. Oh, आराम से भाई. So guys, नहीं आए वो लोग and I forgot to show you guys. तो हम लोग वही सिस्टम किए जो शिवम ने किया था. We literally bent the तार and हम लोग निकल आए हैं. भाई एक भी आम नहीं है. तूफान भी जो बीच में आया था, I think it just swiped off every mango. नहीं है भाई mangoes. Last year like this time when we were seeing the field, बहुत सारे लटक रहे थे. Like it's literally May, right? And can't even see one. What the hell is this? Can't even see one. Guys, एक स्पाइडर मिला है हमें. कितना शानदार दिख रहा है. Oh my god, deadly. नहीं है guys, there's not even one single mango. So maybe global warming or whatever you can call it. Not even one single mango. सब झड़ गया मंजर सब. हाँ मंजर सब झरा है. ये जो तूफान आया था ना बीच में. ये इसी में से निकलता है. हाँ इसी में एक बारिश होगा तो शायद कुछ हो सके, लेकिन नहीं मंजर झड़ गया, अब नहीं हो सकता है. वही थोड़ा बहुत किसी में होगा छुपा हुआ, वो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जो चाहिए वो नहीं हो पाएगा. सैड. अगर हम लोग नहीं है, एक भी नहीं है. Sad, this year we'll not get to eat mangoes from our own field. We have to buy it and eat it. So, yeah, sad. तो उससे क्या होता है, जैसे उनको फायदा करता है ना. ये लोग बहुत ही उदास है. ये बंदा और ये बंदा बहुत ही उदास है. जैसे लग रहा है झड़क गया है. वो काहे हो गया है, मतलब झड़क गया, वो क्या कहते हैं लाही गिर गया है. जैसे देखो ये देख रहा है. This is another tree that has just grown. I think ये spirulina है. I don't know what is this, but जो भी है beautiful है. लग रहा है झड़क गया टाइप ऑफ हाउस. ये नहीं है. हाँ yeah. Here only we can make. This is like the center, I think. No? एक है. Oh, शिवम को एक आम मिल गया. Let's go and see. Let's go and see. ओ भाई नहीं तोड़ेंगे नहीं obvious. शिवम को एक आम मिला है. I think एक बारिश में फिर भी संभावना है. 100. अच्छा है, एक और है ऊपर, सबसे ऊपर देखो. दो गए उसके तो नीचे उसके ऊपर भी है 3-4. नीचे में भी. चलो ये वाला आम ये की गाछ गाछ बच में गया ना. बस जो 3 है. सबसे 3 4 है 5 है. वही बच गया. कैन यू सी. ये हमारे सारे पेड़ों में रहते थे लिटरली, और इस साल तो एक भी पेड़ में नहीं है. सब जानते हो क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? ये बिल गेट्स के कारण. क्यों? आर्टिफिशियल रेन Oh करवाया. yeah, timing was changed maybe because of the experiment of Bill Gates that he did the artificial rain and stuff. So maybe the trees were not, used to something like that. Can say happened, and so she is the Thekedar's wife, and she has come because he has gone for some work or something. So ये आई हमें चाबी देने. कहाँ दिखाता भाई हमें आम? इसमें भूल गए भाई. अगले साल के लिए वेट करेंगे. Wait, that information was false. That Bill Gates is causing it. My ओह friend, he heard it in real. So अच्छा. नहीं तितली. Oh God.
So beautiful, you see? Wow. तो अब हम वो आम को, अब फाइनली एक ही आम बच गया है, तो एटलीस्ट एक आम को ले जाके हम लोग बनाएंगे चटनी। और ये शिवम अपने टैलेंट दिखाते हुए पेड़ की ओर बढ़ते हुए, आम दिख गया है उसे और ये लगाया, या वो जस्ट सामने। ओह, ये है हमारा आम, हो गया है हमारा आम का प्लकिंग। अब इसका शानदार सी चटनी बनाएंगे जो सब खा सके, नहीं तो ये भी व्यर्थ नहीं होगा। इसको अच्छे से पकाएंगे, पहले इसका ये निकालेंगे, फिर उसे अच्छे से स्मैश करेंगे, नॉट इन द मिक्सी, विद हैंड लाइक। चलो लेट्स गो, हम लोग जा रहे हैं नर्सरी अब, क्योंकि आम का तो हमारा डिसअपॉइंटमेंट बहुत रियल था, तो चलते हैं। बिल गेट्स के कारण। बिल गेट्स के कारण हमारा गेट खुल गया है। लेट्स गो नर्सरी चलते हैं अब। वाह कितना सही दिख रहा है। ओह माय गॉड, हाँ शिवम, डन, लेट्स गो। You'll also have to sit. हम लोग आ I just fell down. What is this? Yeah, literally I have the chota plant I had in Noida, but this is big. This is huge. चलो now, अब हम जा रहे हैं towards the end. We'll be coming out. We're going to go nursery. So I'll just show you where the nursery is. हम अपना नर्सरी में तो देखेंगे क्या क्या है. They have a lot of variety. तो this is the best. अगर आपको आना है तो यहाँ आ सकते हैं. कैसे है चाची? ठीक है. फूल लेना था. वाव, ये तो वो है ना रास्पबेरी. तो हाँ ले ये, हाँ ले आए. वाव, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस प्लांट बिकॉज इट्स लिटरली सो ब्यूटीफुल. अच्छा है. नींबू का भी लेना था क्या? ये तो है ना अपन के पास. सो प्रिटी. बनवा देंगे उसमें. मैं कुछ करूँ या ना करूँ, ओके, इन लाइफ आई विल डेफिनेटली हैव अ बिग नर्सरी where I'll have all sort of plants. Like this is my dream. This is literally my dream. दीजिए, उजला भी तो होता है ना. एक उजला दे दीजिए, एक पिंक मोटा मोटा डांड वाला दिया. ठीक. एक उजला दे दीजिए, एक पिंक दे दीजिए, एक ऑरेंज दे दीजिए. ठीक है, एकदम मोटा डांड वाला. नहीं है. सकते डाइनिंग टेबल के लिए. इंडोर प्लांट है. ले लो. यू कैन टेक कड़ी पत्ता. आप कम हियर. आई ऑलवेज कम हियर. मिट्टी का जग भाई. हाँ, मॉम विल बी सो हैप्पी. सो गाइस, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है जग, लाइक सो ब्यूटीफुल. ना बड़का जो गमला दिल्ली है हमें सबके लगा के रख, हम आके ले जाए आधा एक घंटा बाद सबको में डाल देबे. It's cold, natural cold, and
I don't know what to say. It's amazing. They have a baby. Before I had seen only ये, मतलब बस ये था. And now they have a baby. Like, so cute. I think the mother is thinking that I'm going to take the child. But no, I'm never, ever, ever going to do that. Like, never, ever. क्या सही लग रहा है भाई, क्या सही लग रहा है. I've taken like literally 15 plants and I'm excited for them to be on my terrace. Like, can't wait. But बहुत गर्मी पड़ रहा है. I think I have to take a lot of care because if I don't take care. So guys, bargaining कर रहे हैं. We are negotiating. So let's see कितना कम करवा सकते हैं. And yeah, बहुत ही खुश है. We literally took 15 plants total. तो let's see. फूल सब बना के दे छे ना. सारे 3800 होल का ही है, सब मिला के यहाँ के 4,000 दे देवे. चलो ठीक है, लगा के रखो. बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है. इसका तो कुछ पैसा है. गाइस, हमारा शॉपिंग हो गया है. बस हम ये लेके जा रहे हैं मिट्टी का बॉटल बिकॉज़ बहुत सारा था और उन्हें एटलीस्ट 1.5 घंटा लगता वो मिट्टी को सारा अरेंज करने में, फिर प्लांट में अच्छे से लगाना. Nothing can beat this, like nothing. I am going to give my grandmom ice cream क्योंकि उनको खाना था. तो चलते हैं, देते हैं इसे. Let's see how is her reaction. Kulfi. Kulfi. And that urge to put the pallu on her head whenever I am taking a video of her. Literally pure energy. So we are hello. So we're gonna open there. She is never. She's always complaining. कैसा है? अच्छा है? Meaning she's saying that जैसा मैंने बोला था वैसा ही तुमने लाया है. So thank you so much. कितने में दल को 2000 का है ये. 2000. महंगाई बढ़ गया है. महंगाई. आज तुमने सुबह उठकर और अभी तक क्या क्या किया है? बिछौना झाड़े हैं, बिछौना किए हैं, नहाने गए हैं, कोठा पर बिछौना सब किए हैं अच्छा से. और स्नान किए हैं, स्नान करके आए हैं, नाश्ता किया है. this is the arrangement of the entire plants and yeah, it's something like this. And this is the village. ये है दर्शन and that's it. Thoughts रखना चाहिए ना. Cheers. Got me upside